Namaskar, good morning. Sudev again, coming live while driving. Let's talk today a little bit more about my experiences in an ambassador car, and then I will also tell you how you can use the gears and handbrake for emergency braking. So, Ambassador was manufactured in India since 1950s and was originally known as Morris in UK. There was hardly any change done over the years except for some minor modification. The only major change which came in Ambassador was known as Landmaster earlier with the side valve engine. It became an overhead valve engine somewhere in 60s, and thereafter by and large the engine, the gearbox, the mechanical suspensions remained almost same with hardly any change. As the years passed by, some changes further were done in the things like rubber components, or instead of hard rubber components, Teflon bushes were used in suspension. Some change in the steering system was done to make it slightly more easy and less power intensive. So, I already talked a little bit about the fuel pump and its heating issues. One of the first things whenever the car refused to start was to first check whether there is a spark coming or not. How would you do that? Spark plug wire had to be taken out, one of the plug wires, and kept close to the body. Now, when you keep the spark plug close to the body and let the other person crank the engine, there is a high voltage spark which ignites petrol. Now, when you are holding the wire, many a times this spark would give you a shock. So it was an art to know how to hold it, especially if you were wet. It was a pain. But having established that yes, there is a spark in the plug, second thing obviously was to check whether there is fuel coming in the carburetor or not. Because for reasons other than heat also, sometimes the pump would fail. And if the pump fails, there will be no fuel into the carburetor, which means there is no fuel coming to the engine. To do that, you would typically pull apart the pipe near the carburetor. It was a rubber pipe. You would pull it apart and crank the engine, and then you would see jets of fuel coming or missing. If the fuel was jetting in pulses, that means fuel is also coming. If it was missing, then first you had to suck on that pipe to ensure that the fuel pump pipe is primed. And in doing so, well, a lot of times you would get mouthful of petrol, or not mouthful, but petrol in your mouth, and you had to spit it out. It was a bad taste, but well, you had to survive. You had to do things on the run and get it. पेट्रोल भी आ रहा है, स्पार्क भी आ रहा है. अगली प्रॉब्लम होती थी कि स्पार्क प्लग्स जो है वो फॉल आउट कर गए हैं. आज की डेट में जो स्पार्क प्लग मिलते हैं वो उनकी रिलायबिलिटी इतनी अच्छी है, सिस्टम इतने अच्छे हैं दैट वी रेयरली ओपन द स्पार्क प्लग. बट एम्बेसडर टूल किट कैरीड अ स्पार्क प्लग स्पैनर. तो एक एक स्पार्क प्लग को खोलो और उसको साफ़ करो. यू हैव टू क्लीन द स्पार्क प्लग. स्पार्क प्लग का गैप मेंटेन रखना एक और चीज़ होती थी, बट अभी उसको छोड़ दो. फिर एक एक स्पार्क प्लग को क्लीन कर वापस वायर को जोड़कर स्पार्क प्लग को बिना अंदर डाले, विदाउट पुटिंग द स्पार्क प्लग इनसाइड, जस्ट वायर को कनेक्ट कर पहले ये चेक करो कि स्पार्क आ रहा है या नहीं आ रहा. अगर स्पार्क प्लग में स्पार्क हो रहा है, फिर उसको वापस जोड़ो और फिर अगला प्लग करो. ये भी एक ध्यान की प्रतिक्रिया थी. इसके लिए भी बहुत ध्यान रखना पड़ता था. यू हैव टू बी केयरफुल that you do not open all the plugs at once
because if you did, the chances of your mixing up the wires were high, which means that wire of plug number 1 had to be plugged into wire of plug number 2 only. And all the 4 wires, because there were 4 spark plugs, all the 4 wires had to be plugged in the correct plug. Otherwise, misfiring would happen. And then again you would crank. Hopefully, by these 3 things, your problem would be solved. Cranking ज़्यादा करो तो बैटरी डाउन हो जाती थी, तो इसलिए कई बार धक्का भी लगाना पड़ता था. पुरानी एम्बेसडर गाड़ी में एक एल शेप का हैंडल भी आता था, जो आगे बम्पर में एक होल होता था, उसके अंदर से डालकर इंजन के साथ जोड़ा जाता था और फिर हाथ से you had to crank the bloody car with your hands. Again, something which you have to learn, because if you place your hands improperly, a backfire could actually crack your wrist, or if not held tightly enough, it could give a whack on your hand, which was very, very painful. And believe you me, मैं ये सह चुका हूँ. मगर ये भी चीज़ सीखनी ज़रूरी थी, क्योंकि जब सर्दियाँ होती थी स्पेशली, तो पहले इंजन को हाथ से क्रैंक करना पड़ता था, या बैटरी की क्वालिटी अच्छी नहीं होती थी, दी ओवरऑल क्वालिटी वाज नॉट दैट गुड, सो आपके पास बैटरी डेड हो जाती थी, या बैटरी में पावर कम है, या सर्दी ज़्यादा है. कितनी बार होता था कि हमारे को हैंडल लगाकर इंजन को क्रैंक करना पड़ता था. इससे ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो फिर तो मैकेनिक चाहिए, बिकॉज कार्बोरेटर खोलना भी एक आर्ट थी. कई बार क्या होता था, कार्बोरेटर में कचरा आ जाता था. बहुत ध्यान से यू हैड टू ओपन द टॉप ऑफ द कार्बोरेटर, you needed to open the screws. Well, the screwdriver was available, but you had to be very confident that you're doing it if you knew what you're doing. I have done it, but it involved removing the top of the carburetor cover, making sure that no jet or needle valve falls down. Needle valve कार्बोरेटर के अंदर एक छोटी सी नीडल होती है जो अपने आप फ्लोट के ऊपर लगती है. जैसे कूलर में फ्लोट लगता है ना कि पानी ओवर ना हो जाए, ऐसे ही वो नीडल वाल्व पेट्रोल ओवर ना हो जाए कार्बोरेटर में, उसका ध्यान रखती थी. और देन यू हैड टू क्लीन द कार्बोरेटर. द बॉटम ऑफ द बाउल यूजुअली हैड कचरा, यू हैड टू क्लीन इट अप. बाद में इनलाइन फिल्टर्स एडिशनल लगा लेते थे ताकि कोई कचरा कार्बोरेटर में जाए ना. कार्बोरेटर को साफ़ करने के बाद वापस जोड़ना ताकि वो लीक नहीं करे. उसमें एक छोटा सा गैस्केट भी पड़ता था. दैट गैस्केट कुड इफ टाइटन इम्प्रॉपरली would not sit properly and the carburetor will not function. So you had to know all this if you were adventurous and you were going to places where normally mechanic is not available. So you had to be on your own, you had to be able to troubleshoot. क्रैंक करना आना चाहिए था गाड़ी को, धिक्का तो मारना आना ही चाहिए था. एम्बेसडर गाड़ी में एक और नॉब होती थी जिसको कहते थे चोक. चोक का काम ये होता था कि एयर सप्लाई के साथ फ्यूल ज़्यादा मिक्स हो. इट इज़ कॉल्ड रिच फ्यूल मिक्सचर, ताकि सर्दियों में इन द विंटर्स व्हेन इट इज़ कोल्ड स्टार्ट, द रिच फ्यूल मिक्सचर विल बर्न ईजीली. दो इट विल गिव अ लिटिल मोर स्मोक, बट इट विल बर्न ईजीली एंड द इंजन वुड स्टार्ट. If you forgot to put the choke back, or you push the choke back from the dashboard, but the wire has not really been able to push the carburetor lever back, your fuel efficiency could drop down drastically and engine would start sputtering. चलते चलते झटके मारना शुरू कर देगा. So you had to also know कि चोक को अगर वापस खींचना है कार्बोरेटर साइड से, spring was supposed to do the job, but since choke was used very less, तो क्या होता था कि वो चोक का जो लिवर है उसके आसपास मिट्टी जम गई या कचरा जम गया तो वो जैम कर जाता था. तो हाथ से उसको वापस घुमाकर ज़ीरो पोजीशन पर लाना पड़ता था. और क्या होता था,
बैटरी का तो प्रॉब्लम था ही था कि बैटरीज वर नॉट दैट रिलायबल, कभी कभी चार्जिंग कम होती थी, डायनेमो छोड़ जाता था, कार्बन बुश ख़राब हो जाते थे। ये सब कुछ करते हुए आपको एक और सिस्टम का ध्यान रखना पड़ता था विच इज़ कॉल्ड रेडिएटर। रेडिएटर तो आज की गाड़ियों में भी होता है, बट आज की गाड़ियों में जो रेडिएटर है इट्स सील्ड इफेक्टिवली so that excess water is caught in a tank, and when the car cools down the tank pulls or sucks the water back. Now what happens is that this becomes a closed system. When the water heats up, it expands, and that excess water, expanded water, goes into the overflow tank, which is a plastic bottle today. Earlier there was no bottle. So when radiator would become warm, the water would be thrown out, and every time the water is thrown out, it is not replenished. So one of the first things you did every morning was to top up the water, because repeated cycles of throwing this excess water out meant that you could run on low coolant, and उस वक्त कोई coolant वो mixture भी नहीं होते थे, it was just pure water. Quality of water being bad, sometimes your radiator would rust badly or leak, then you had another problem. Yeah. So maintaining the water in radiator was important. Now also was important is when the radiator was warm or hot, not warm, hot, steaming hot, how to let off the pressure, because sometimes you just had to let off the pressure, steam pressure, and fill up the radiator with cooler water because the engine has become very hot. You risked the chance of burning your hand because of the escaping steam from the radiator cap. So you had to have a big cloth and very gingerly remove the cap and move away, because अगर इंजन गर्म है, उसमें पानी कम है, तो it would shoot a fountain of hot steam and water, and you have to be very, very careful. This especially used to happen when you go to the hills, because the engine would heat up. You had to stop by the roadside, you had to wait adequate time, and then open the radiator cap, put in new water, cool water, close the cap, and then go further. So opening the radiator always had to be done cautiously when the car was hot. Radiator leaks was another problem. I'll deal with it. ये भी एक किस्सा सुनाऊंगा कि रेडिएटर लीक कर जाए तो क्या करते थे. मगर रेडिएटर्स, फैन बेल्ट बदलना आना चाहिए था. थोड़े बहुत हाथ के बैक साइड जो है ये कहीं ना कहीं गर्म इंजन में लगकर जल भी जाती थी. इसके बावजूद एम्बेसडर गाड़ी हमारे को ऐसी ऐसी जगह लेकर गई, या हम गाड़ी को ऐसी ऐसी जगह लेकर गए जो कई बार हम सोचकर आज घबराते हैं कि भाई हम ले कैसे गए उन गाड़ी को. हाउ डिड वी इवन रीच दोज प्लेसेस? Been to so many long distance locations in Ambassador with all these shortcomings or all these potential problems. Were they potential? Not really, because these used to happen. They were not potential, they were only potential कि कब होगी तो सही, मगर कब होगी. So और बात करेंगे अगली बार. मगर जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि मैं इस गाड़ी का क्या क्या करना है, कैसे कैसे मेंटेन करना है, वो एक अलग ही दास्तां है. चलिए फिर मिलते हैं.